Hello everybody, welcome back to another session on C programming. We are discussing concept of selection construct in C language. सर म्यूट आहे वाटतं तुमचं. In the last session, we had discussed few examples and I also asked you to solve few more examples. I had given you some assignments. So what is the assignment that was given to you? Yes, anybody? Sir, first one was the department code one. Huh? That if the department code is a salary bonus will be 0 for them. Okay, but that we had discussed in the class, no? That you have given to write by your own, and second one was gross amount and cash discount, etc. Okay. So one example that we had discussed, I still asked you to solve it all over again. ऐसा ही था ना, डिस्कस किया था, दोबारा सॉल्व करने के लिए कहा. Yes, sir. Okay, so let's talk about that question itself again. So although we had discussed it, I had still asked you to solve it all over again to understand what has gone wrong. It looks like only Ashish has solved, only he has shared the solution. बाकी लोगों ने solve किया. Anybody else who has solved the assignment? Raise your hand. Yes, sir. Raise your hand. Raise your hand. मुझे देखना है count करना कितने लोग हैं. सर कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है बट ट्राई किया है. जो solve किया हमने वो भी नहीं हुआ solve. जो क्लास में डिस्कस नहीं किया. आपने जो बोला वो आउटपुट भी आया सर, वो सॉल्व किया. तो मैं पहली बार पहले असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ. डिपार्टमेंट कोड वाला. ओके How सॉरी. many of you solved that? Department code. Only 4 have solved. Rest are so smart that they don't feel a need to solve that particular assignment. Is that the case? एकदम ही फालतू था. आपके लेवल का नहीं था क्या असाइनमेंट कि आप सॉल्व करें. That's very very disheartening. Okay. कैसे चलेगा ऐसे? As we go ahead, if you are not going to solve the assignments, you will find programming very very difficult unnecessarily. अगर आप अभी से प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करोगे, that's the only way. I can understand आकाश अगर आपके एग्जाम्स है, बट सबके एग्जाम तो नहीं है. So that's very bad. And reason I had told you, but मैंने सिर्फ सॉल्व करने के लिए नहीं कहा था, और कुछ कहा था. आशीष क्या कहा था? सॉल्व करके क्या करो? Sir, find out a mistake where it is. तो क्या मिस्टेक मिला आपको? अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं जो आपने सॉल्व किया, एक तो आपने इसे इंडेंट ढंग से नहीं किया. इसे इंडेंट करो, ये ऐसे चाहिए, और एक वैल्यू से सबसे नीचे चाहिए ऐसे. तो यू हैव टेकन फ्लोट बेसिस सैलरी, कैट डिपार्टमेंट कोड, फ्लोट बोनस, एंटर योर डिपार्टमेंट कोड, कैपिटल लेटर, परसेंट सी करते हुए एक्सेप्ट कर लिया, एंटर द बेसिक सैलरी, परसेंटेज करते हुए एक्सेप्ट कर लिया, और फिर डिपार्टमेंट कोड दे दिया. डिपार्टमेंट कोड नॉट इक्वल टू ए, बोनस इज बेसिक सैलरी इन सो सो. अदरवाइज यू गो अहेड डिस्प्लेइंग बोनस. ये डायरेक्टली बोनस डिस्प्ले करना रिस्की था, because I have been telling you time and again, this particular variable is going to have undefined value, unknown value. There can be garbage. We were only lucky last time that we got answer as 0, but that is not guaranteed. यहाँ 0 आएगा कोई जरूर नहीं है. These are local variables. Local variables are not defined, initialized. They may have some garbage value. And one fine day, when things are very important, and when you want to run the program, you will get, suppose department code किसी ने ये दिया, ये होने पर एक कंडीशन फॉल्स है, और ये when you want to display bonus, it may display 1 lakh also. It can display anything. Why? Because this variable has not been initialized. So this was a wrong solution to write. You should have initialized this particular variable to 0.0f. ये initialize करना जरूरी था. First thing. Then second problem. We asked you to enter department code in capital letters. You accept the department code. You accept the basic salary, and then you're checking department code not equal to A. You are saying bonus is equal to basic salary into 0.05. I told you time and again not to use such magical numbers. ये 0.5 क्या है? Okay, 0.5 क्या है? Is it, what is this 0.5? Nobody will be in a position to explain what this 0.5 stands for. So if you have a number and that number has a meaning, define a constant मैंने कहा था. So you should have rather define a constant saying float
constant float constant is one and the same. Float constant, you could have said bonus rate, and bonus rate could have been 0.5. That was bonus rate. So it was necessary that you give a name to this constant and use over here basic salary into bonus rate. That's how you should say. So no magical numbers allowed. इतना डिस्कशन करने के बाद भी आपने मैजिकल नंबर्स यूज किया था, नॉट एक्सेप्टेबल. तो वी से डिपार्टमेंट कोड नॉट इक्वल टू ए, बिफोर एंड आफ्टर द ऑपरेटर यूज स्पेस. तो डिपार्टमेंट कोड अगर ए नहीं है तो बोनस इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू बोनस का रेट. तो इन दैट केस वी गेट द बोनस का रेट, वी कैलकुलेट बोनस एंड देन यू प्रिंट द बोनस. बोनस इज व्हाट, रुपीज में है, पैसे में है, क्या है? ओके, ये बेसिक सैलरी अगर आपका रुपीज है तो बोनस भी तो रुपीज में ही है, और ये बोनस जब डिस्प्ले करोगे राउंड इट अप टू 2 digit precision. So these are small things that you should take care of. Now this is quite an acceptable solution that we have. Now it's the same one that I had solved earlier as well. We had this bonus rate which has been defined. Here I have defined constant float. Even if I say float constant, it will still not matter. It's one and the same. So const या t const आप कैसे भी लिखो चल जाएगा. Let's cross check what I'm saying is really the case or not. तो अगर हम लोग डेवलपर के कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, आपके फाइल का नाम है department.c. I go to D drive and I say CL यहाँ नहीं है फाइल, कहाँ से की है फाइल? डेस्कटॉप पे से हुई है. सेव दिस फाइल ऑन डी ड्राइव. ये हमने department.c डी ड्राइव में सेव कर दी. नाउ इफ आई वांट टू कंपाइल दिस फाइल, यहाँ हमारे पास department.c है. I say CL department.c, file has got compiled, it will also run. Enter the department code in capital letters. मैंने कहा डिपार्टमेंट कोड इज ए. सैलरी कितना है? मैंने कहा 10,000. कहता है बोनस इज 5,000. यानी अगर आपने भले डिपार्टमेंट कोड एंटर करने के लिए कहा कैपिटल लेटर में, उस ऑपरेटर ने अगर स्मॉल केस में दे दिया, डज दैट मीन यू गिव रॉन्ग आंसर? यू शुड आइडेंटिफाई द इनपुट इज नॉट अप्रोप्रिएट, बट ए इज ए. आई कैन आर्ग्यू विथ यू, डिपार्टमेंट कोड तो ए ही है ना, ए को नहीं देना चाहिए था. ऐसा थोड़ी कैपिटल ए डिपार्टमेंट कोड है. नेक्स्ट टाइम आई गिव कैपिटल, नेक्स्ट टाइम okay, this was the thing, we got the answer. We run the code once again, and this time round I use capital A, and salary is supposed 12,000. The 1 lakh. अब ये कह रहा है bonus rupees 0.0. That's okay, but there is a big mistake over here, and the mistake is if I enter E, वो कहता है basic salary अगर 40,000 है तो कहता है bonus is 20,000. अरे मगर आपके पास डिपार्टमेंट कोड E था ही नहीं. The question did not have department code as E. The department codes only ABCD. इन चारों के अलावा कोई डिपार्टमेंट कोड है ही नहीं. एंड आप कह रहे हो अगर डिपार्टमेंट कोड नॉट इक्वल टू ए. अरे मगर डिपार्टमेंट कोड नॉट इक्वल टू ए चलेगा ही नहीं, आपके पास 4 ही डिपार्टमेंट थे. तो अगर कोई डिपार्टमेंट कोड ए की जगह ई दे रहा है, दिस प्रोग्राम फेल्स. तो एज लॉन्ग एज समबडी गिव्स ABCD, इट्स वर्किंग राइट. दैट टू अपर केस ABCD, इट्स वर्किंग राइट. So this program is not a right solution to the problem that we are discussing. If user enters capital B and he enters basic salary as 1 lakh, we are getting answer bonus is rupees 50,000. That's perfect. I run the code once again. User enters the department code as R. R नाम का कोई department code ही नहीं है. And he enters basic salary as say 30,000. कहता है bonus is 15,000 rupees and so on. Totally wrong. R नाम का कोई department code है ही नहीं. तो ये condition जो हमने short दिया था, that's not really working right. So how should I change the condition so that I get the right result? Anybody? Sir, we can do or, such as department code is equals to A or small a or capital B. ऐसे करते करते पूरा D तक. चलो कहाँ तक कितने कंडीशन ऐड करे वहाँ बताइए. Sir, 8 नहीं 6 condition. Pardon? सर 6 हम condition. 6 कंडीशन. चलो वो स्मॉल केस अपर केस का देख लेते हैं. ABCD का नहीं बताओ क्या लिखेंगे. समझो अपर केस में दे दिया तो क्या करोगे? कितने कंडीशन लिखेंगे आप? Sir, can you repeat the question? अगर वो अपर केस लोअर केस की बात छोड़ दे, आप समझो यूजर अपर केस में ही एंटर कर रहा है
तो कितने कंडीशन लिखने होंगे आपको यहाँ? सर फिर 3 लिखने पड़ेंगे। 3 लिखने होंगे। क्या कंडीशन लिखने होंगे? डिपार्टमेंट कोड क्या लिखूं? डिपार्टमेंट कोड इज इक्वल्स टू इक्वल नहीं, डबल इक्वल हाँ। टू बी और डबल स्ट्रेट लाइन और डिपार्टमेंट कोड इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डबल इज इक्वल्स टू सी सी और डिपार्टमेंट कोड इज इक्वल्स टू डी। कोड इक्वल टू डी। नाउ लेट्स सी। तो हमने थोड़ा चेंज किया। अगर मैं कह रहा अगर डिपार्टमेंट कोड एक बी है और डिपार्टमेंट कोड सी और डिपार्टमेंट कोड इज डी, यानी इन तीनों में से कोई रहेगा तो मैं बोनस दूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट बी गिवन एनी बोनस। So let's see what Ashish has thought. Is it right or is it not right? For that, let's trace this particular code to check whether this solution is right or not. इसे टेस्ट करने के लिए हम लोग इसे ट्रेस करते हैं। हाँ, ये तो डायरेक्टली रन किया मैंने गलती से। We have been asked to enter the department code. यहाँ से हम लोग उसे ट्रेस करेंगे, डायरेक्ट टू द ब्रेक पॉइंट। अब ट्रेस करते हैं। We are at this print statement and we are checking. We are printing a statement. We are asking user to enter the department code. Here we are. Please enter the department code. User enters department code as capital B. Please enter the basic salary. User enters some basic salary. User enters basic salary as 40,000. And then we check for the condition. B equal to B. True or false? True, sir. True है. If the first condition is true and more than one conditions have been joined by using logical OR, क्या होता है? True. Concept क्या था? When more than one conditions are हाँ. joined using logical OR, if any condition values true, what happens? उसके बाद की चेक नहीं करेगा वो। उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन होगा। तो ये पहला कंडीशन ट्रू है, ट्रू और एनीथिंग इज ट्रू, सो देयर इज नो पॉइंट इन चेकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द कंडीशंस, so it will not check for the rest of the conditions. Control condition is answer is already true, so it goes inside, it calculates bonus 50% and it displays the bonus that is 10,000 या 20,000 जो भी bonus display कर दिया। But then हाँ और की जगह एंड लगाया तो कोई ऐसा बंदा होगा जिसका डिपार्टमेंट कोड B and C and D होगा, ऐसा कोई बंदा हो सकता है? एक ही रहेगा। नहीं होता ना, तीनों नहीं हो सकता ना, किसी भी आदमी के तीनों डिपार्टमेंट नहीं हो सकते। So here we ask user to enter the department code once again. This time round, user enters department code that is A. User enters department code that is A. So here we go. यहाँ आ गए। User को कहा please enter department. We run it once again. We are asking the user to enter the department code. So we are here. We are asking user to enter the department code. User enters department code as capital A. Then I come. Then I ask user to enter the basic salary. Basic salary enter करने के लिए कहा. User enters basic salary as 30,000. अब मुझे बताइए A equal to B. True or false? False. False. A equal to C. True or false? false A equal to D. True or false? false False or false? 0 False or false? False. False. ये जो आंसर false आया है और false, उस आंसर को अगर वापस और with false किया, false or false? false If it is false, this statement will be skipped. ये statement skip किए जाएंगे, control directly jumps over here and displays the bonus. Now since he belong to department A, उसके लिए bonus कितना है तो ₹0 है. They have got the message. So this is working right now. So Ashish's idea is working right. Let's do one more check to check whether Ashish's idea is right or not. So here we go. We ask user to enter the department code once again. And user enters department code. This time round, user enters. हमने उसे prompt किया A या B या C या D. And user enters department code as W. क्या आपके पास कोई W department है क्या? no sir Then we ask user to enter the basic salary. no Basic salary.
तो user enters basic salary say as 10,000 या 1 lakh, and I check W equal to B, W equal to C, and W equal to D. All the conditions are false. Yes, sir. So false or false or false is false, and we go here displaying bonus is so and so. हमने डिस्प्ले किया bonus rupees 0.0, यानी bonus for employee from department code W is 0. क्या आपके पास W नाम का कोई डिपार्टमेंट कोड था क्या? No. No. So this solution is also wrong because it is displaying bonus for an employee which belongs to a department which is non-existing. W नाम का कोई डिपार्टमेंट नहीं है और फिर भी कह रहा है bonus is rupees so and so for W department. Rather, if somebody enters W, it should have told the user कि ये department code गलत है. This is not a valid department code. So this solution that we have done, prima facie looks right. It is not right. Now that we know selection construct, every input that we accept from the user, we should check whether input is correct or not. If the input is not right, we should not even proceed further. यहाँ ये जो डिपार्टमेंट कोड था, ये कंडीशन जो हम यहाँ लिख रहे हैं, तो हमें ऐसा ही कोई कंडीशन यहाँ लिखना जरूरी था टू चेक वेदर द डिपार्टमेंट कोड इज वैलिड और नॉट. तो मुझे लिखना चाहिए था वैलिड डिपार्टमेंट कौन कौन से, डिपार्टमेंट कोड वैलिड कौन कौन से हमारे पास. सर ABC. हम लोग और एक इफ कंडीशन बनाकर उसमें लिख नहीं सकते क्या क्या कि ABCD को छोड़ के जो भी रहेंगे उसमें वो कैसे लिखेंगे, प्रिंट कर देंगे कि इनवैलिड डिपार्टमेंट. कैसे लिखेंगे? Can use the else statement. A to Z को not नहीं सर, अभी जैसे BCD लिखा ना वैसे एक और ऐड कर देंगे. कहाँ ऐड करो, लाइन नंबर बताओ सर लाइन नंबर 28. वही यहाँ मैं लिख रहा हूँ. यस. Otherwise, wrong. we can तो वही write लिख रहा हूँ. after और the. कुछ नो, देयर इज नो. अगर डिपार्टमेंट कोड गलत है तो बेसिक सैलरी एक्सेप्ट करने में कोई पॉइंट ही नहीं है. यस सर. Okay, so I'll first check if department code not equal to A. अगर डिपार्टमेंट कोड A नहीं है और ओके एंड कोई कह रहा था थोड़ी देर पहले सर एंड यूज करेंगे तो चलेगा क्या. अब मुझे यहाँ एंड यूज करना होगा. एंड डिपार्टमेंट कोड नॉट इक्वल टू B एंड सही है क्या? देखो एंड डिपार्टमेंट कोड not equal to C और की जगह and डिपार्टमेंट कोड not equal to D. अगर ये डिपार्टमेंट कोड A भी नहीं है, B भी नहीं है, C भी नहीं है और D भी नहीं है तो वो कौन सा हो सकता है? मुझे बताइए ये कंडीशन कब ट्रू हो जाएगा? सर ABCD को छोड़ के बाकी लेटर आएंगे तो. यानी इनवैलिड डिपार्टमेंट कोड रहेगा तो ये कंडीशन ट्रू आ जाएगा. Z लेते हैं, Z not equal to A, Z not equal to B, Z not equal to C, Z not equal to D. यानी Z ABCD में से कोई भी नहीं है. अगर नहीं है तो वो इनवैलिड डिपार्टमेंट है. I would immediately print an error message saying printf, and that too I'd use another form of printf saying fprintf. Fprintf gives you a choice to specify where should the output go. And I'll say let the output go to std_err. Standard error stream पे output ले जाइएगा और क्या output लेना है? Invalid department code enter. The valid department codes are A/B/A/B/C/D. ऐसा मैसेज देंगे यूजर को. और अगर आपने गलत डिपार्टमेंट कोड दिया और देखो मैंने आउटपुट कहाँ भेज रहा हूँ तो std_err इज एरर स्ट्रीम यानी एरर मैसेज है तो एरर स्ट्रीम पे भेजिएगा. नॉर्मली printf sends the output to std_out. That's your output stream. Now I am sending the error message to error stream. और प्रोग्राम को कंटिन्यू करने में पॉइंट नहीं है तो आई कॉल फंक्शन कॉल एज एग्जिट एंड आई से एग्जिट फेलियर. ये गलत हुआ है कुछ तो, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग सो आई वुड लाइक टू स्टॉप रनिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. तो आई कॉल एग्जिट फेलियर. तो मैंने कहा एग्जिट करो, प्रोग्राम को रोक दो यार, प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करने में पॉइंट ही नहीं है. सो देयर इज अ फंक्शन कॉल एज एग्जिट दैट टर्मिनेट्स द प्रोग्राम. वी हैव टू पास द स्टेटस व्हाट वाज द रीजन फॉर टर्मिनेशन. मैं कह रहा हूँ ये फेलियर है. फेलियर क्यों है? बिकॉज आपने डिपार्टमेंट कोड सही नहीं दिया है तो आगे बढ़ना ही नहीं है. So let's trace this code from this point onwards to see what's going to happen. या directly run करके दिखाता हूँ आपको. If I run this particular code this time around and I enter like last time a wrong department code. I enter department code as W. कहता है देखो ये रेड कलर में आ गया है. अब तक तो सारे प्रिंटफ व्हाइट कलर में आ रहे थे, अभी रेड एरर में आ रहा है बिकॉज ये एरर है.
ये आईडीज आर फैंटास्टिक. एफ प्रिंटफ कह रहे हैं कहाँ भेज रहे हैं, stderr एरर स्ट्रीम को भेज रहे हैं. So since you are sending the output to error stream, it has appropriately displayed in red color saying valid department codes are ABCD. You have entered an invalid department code, non-existing department code. आपने गलत एंटर किया. तो ये वैलिड ये है, तो ये भी बताएंगे यूजर को you have entered invalid department code. हम दो मैसेज देंगे, डिपार्टमेंट कोड एंटर इज इनवैलिड एंड द वैलिड डिपार्टमेंट कोड इज सो एंड सो. अगर आपको डिपार्टमेंट कोड जो दिया है यूजर ने वो भी चाहिए तो यहाँ लिखिएगा स्लैश कोड्स %c स्लैश कोड्स, बिकॉज मुझे कोड्स में डिस्प्ले करना है उसे. और वो कौन सा है, तो आपका जो भी डिपार्टमेंट कोड आपने एंटर किया है. लुक एट दिस नाउ, दिस विल बी मच बेटर नाउ. I run the code. We are now looking at how to write proper and safe codes. Code तो कोई भी लिख देता है, safe code लिखना जरूरी है. We have been asked to enter department code. Somebody enters department code as R. कहता है the department code R. Look how R has been displayed. Codes में entered is invalid. जो आपने department code R enter किया वो invalid है. The valid department codes are ABCD. So when you're going to stop the program, you are telling the user it's an error. They also explain him what's wrong. बताइए उसे ये जो आपने department code enter किया वो गलत है. और इसीलिए we have stopped the program. No point in accepting the basic salary and so on. But this time I decide to enter the right department code. चलते हैं right department code enter करते हैं. I enter department code as A. Let me check. A not equal to A. false. False. When you join more than one condition using logical AND और कोई भी condition false आ जाता है तो क्या होता है? फॉल्स हो जाता Short है. circuit. पूरा false हो जाता है. AND में थोड़ी देर पहले कोई पूछा था और का क्या, तो यहाँ AND में if any condition equals to false, rest are all are false. तो ये false है, आगे का condition check नहीं करेगा, false है तो यहाँ जाएगा, यस सर. इसके अंदर जाएगा ना इसमें. यस सर. क्या yes? False होने पर अंदर आता है क्या? These statements are to be executed when the condition is true or when the condition is false. If के अंदर लिखे Condition हुए true होगी statement तो true. कंडीशन ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होता है या फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट होता है? True. ट्रू होने पर. अभी ये फॉल्स आ चुका है. सिंस इट इज फॉल्स, कंट्रोल डायरेक्टली जंप्स आउट एंड देन वी आस्क यूजर टू एंटर द बेसिक सैलरी. यूजर एंटर्स बेसिक सैलरी से 40,000 या 4,000, चलो जो भी है. 4,000 इक्वल टू ए है क्या, इक्वल टू सी है क्या, इक्वल टू डी है क्या, है क्या? No sir. 4,000 नहीं, डिपार्टमेंट को ए इक्वल टू बी है क्या, ए इक्वल टू सी है क्या, ए इक्वल टू डी है क्या? No sir. No. So in that case, we go to directly out and we display the bonus is so and so. तो बोनस कितना है तो 0.0 है. आपने डिपार्टमेंट कोड तो सही दिया है पर डिपार्टमेंट कोड ए है इसलिए बोनस 0 है. बट दिस टाइम राउंड आशीष ने जो यहाँ कंडीशन कहा था अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है. वी डोंट नीड दिस कंडीशन बिकॉज वी विल रीच दिस लाइन ओनली इफ यूजर एंटर्स वन ऑफ दिस ABCD. अगर एंटर करता है तो यहाँ तक आओगे. तो यहाँ आई विल ओनली चेक इफ डिपार्टमेंट कोड नॉट इक्वल टू ए नहीं है तो मैं बोनस दूंगा. मुझे उस और की जरूरत नहीं है बिकॉज अगर आपने ABCD के अलावा कुछ दे दिया तो दिस इज अ वैलिडेशन दैट यू आर डूइंग. ये इनपुट वैलिडेशन किया हमने. What we are doing is we are doing input validation. Remember, in computing, there is one rule that you always have to keep in mind. That rule is garbage in, garbage out. अगर आपके इनपुट में गार्बेज आ जाता है, आपका प्रोसेस कितना भी बढ़िया हो, आउटपुट गार्बेज ही आएगा. Right now, summer season is on. Correct? There are a lot of sugarcane vendors across on the street. And what do sugarcane juice vendors sell us? The juice. Okay. And how do they get the juice for us? By what process? What? By crushing the sugar. Crushing. By crushing, correct? So they apply the process of crushing. So process क्या है? Crushing का है. Process is crushing. So what do? They take the sugar canes, and once they take the sugar canes, they put into that crushing machine, and once that sugar canes are crushed, what we get is the juice. Yes or no? Yes sir. Yes sir. So in this case, processing क्या हुआ उस sugar cane पे? Processing कौन सा हुआ? Process कौन सा हुआ sugar cane पे?
तो क्रशिंग हाँ। होगी। Crushing. So crushing was the process. Every program that we write is actually the process, is the operation that we are carrying out on the input data. So crushing हुआ है crushing का. Now one fine day, if the sugarcane vendor runs out of sugar canes, तो उसका जो तंबू कड़ा क्या है, उसका अगर एक कोई बाम्बू स्टिक है, शुगर केन की जगह बाम्बू स्टिक डाल दिया, वहां भी तो क्रशिंग होगा. You will get the juice once again. Yes or no? No, sir. No. Yes. शुगर केन की जगह बाम्बू डाल दिया उस शुगर केन क्रशिंग मशीन में, तो will it not crush? Crush sir. होगा sir, but It will crush. Juice That नहीं means the Juice process नहीं is है. correct. हाँ. But although the process is right, will you get the expected result? No. no sir. So however correct your program may be, however correct your process may be, if the input is garbage, output is going to be garbage. So you, before you initiate the processing, check whether input सही है क्या. Input अगर सही नहीं है, तो don't do the processing, because computers work on a principle of garbage in, garbage out. However good your process may be, if the input is invalid, output is bound to be invalid. To avoid that problem, what we have now done is input validation. So now we are trying to write safe and neat code. इसे clean code कहते हैं, safe code कहते हैं. So what we are trying to do is, we are trying to check whether input is right. I would proceed further. I would proceed with the process of crushing only if I know I have a sugar cane and not some other cane. Okay, so here we have done the same validation in this code. I am checking क्या department code सही दिया है क्या आपने? अगर department code सही दिया है, then I will carry out this operation. Otherwise, there is no operation to be carried out. If the input is wrong, if the user does not enter department code, one of these 4 department codes, वो A भी नहीं है, B भी नहीं है, C भी नहीं, say he enters R. R not equal to A, R not equal to B, R not equal to C, R not equal to D. आए यहाँ error message print कर लिया. Exit function terminates the execution of the program. Program को ही खत्म करेगा. लिख लो. It terminates the execution program. Where did we get this exit function from? This exit function is present in header file called as htdlib.h. htdlib में है. देखो htdlib.h से आ रहा है terminate. In terminate, we should pass a status code. Status code मैंने failure का पास किया है. Failure means 1. Any non-zero value represents कि failure है. तो यहाँ मैंने status code 1 पास किया. आप status code 1 की जगह और भी कुछ पास कर सकते थे. आपकी मर्जी है. But इसका how to get that value I'll teach you later. But currently ये exit failure है. So terminate the program by calling function exit. It terminates the program, stops the execution of the program. आगे के statements execute होंगे ही नहीं. Then let's see whether this is completely right even now. We enter the right department code. I enter the department code as B. That's a valid department code. मुझे पूछा जाता है सैलरी क्या है. मैंने कहा सैलरी है -30,000. तो उसको क्या -15,000 का बोनस दिया जाएगा क्या? अगर -30,000 सैलरी आ भी सकता है. किसी ने लोन लिया था, he did not pay back to the company. कंपनी उसके सैलरी से डिडक्ट किया. तो -30,000 सैलरी है तो -15,000 बोनस थोड़ी ना आएगा उस पे. So that's totally wrong. यानी सैलरी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए थी. The least amount of the salary that you could have paid was 0. You're not going to issue a check of -30,000 to the customer to the employee. So that was again an invalid statement. So we had to enter a basic salary. And how could basic salary be -30,000 or something like that? But if user enters -30,000, we should have prompted the user saying bonus salary cannot be negative. It can be 0. You're not going to pay him any salary. That's okay. But it definitely cannot be 0. Okay. So we should have done some validation over here as well. मुझे चेक करना चाहिए if that's again an input validation. If basic less than minimum salary, अगर बेसिक मिनिमम सैलरी से कम है तो एरर मैसेज देंगे. अगेन इफ प्रिंट है. हमने कहा बेसिक सैलरी कैन नॉट बी नेगेटिव. बट ये मिनिमम सैलरी क्या है? जो आपकी मिनिमम सैलरी आपने डिसाइड की रहेगी.
So I define a constant variable, const float minimum salary is equal to 0.0f. ये आपकी minimum salary. Now that we have defined basic salary, मैं कहता basic salary less than minimum salary. अगर basic salary less than minimum salary, I can say लेने less than 0 है, तो वो negative है ना, तो हम कहेंगे it cannot be negative, and it cannot be negative. अगर negative enter किया है, तो we'll terminate the program. We don't want to continue the program if the input is wrong. Okay. So next time user enters correct department code, but he enters invalid basic salary. The correct department code वो भी enter करता है, but salary देता है -45,000. We'll say ना, basic salary cannot be negative. Exit value 1. ये 1 क्यों आ रहा है? Because आपने वहाँ से 1 return किया था. कौन सा 1? Exit failure का value 1 है. तो हमने प्रोग्राम को यहाँ तुरंत रोक दिया है. अगर सब सारे इनपुट सही है, then only I'll make an attempt to calculate the bonus and so on. Now user has understood what mistake he is committing, so this time around he enters the right data. He says department code C है और basic salary 50,000 है, so then the output is say bonus is 25,000 rupees and so on. So there are so many of precautions that you have to take. What we started off with was a very small program, and look, for just doing such simple operation, we had to write about 50 lines code, 50 line का code. 50 नहीं, अगर ये 15 भी line निकाल दें हम लोग, even then 35 lines of code is what we have written. And after all this, it's still not right. Why? When I enter the department code once again, user enters department code as C. कहता है department code is invalid. अरे ABCD का है, मैंने तो C enter किया है. What's the mistake over here? Small. अरे but C तो C है. आपके लिए और मेरे लिए C, but for the machine, uppercase C has a different code that is 65, 60, 67, and small case C 97, 98, 99. So these are two different characters. For us, C is case sensitive. For us, uppercase C or small case C is C. And user will argue with you. मैंने तो सही department code दिया है. So when user enters department code, let it be C or Z or Q or P, we should have first converted that particular department code into an appropriate type case. And to do that, we have आशीष ने कहा था सर यहाँ कंडीशन डालेंगे 3 की जगह 6, तो आशीष का लॉजिक यूज करता हूँ मैं, तो यहाँ 4 की जगह 8 कंडीशन डालने होंगे आशीष. यस सर. तो और 4 कंडीशन कौन से आएंगे सर? स्मॉल केस वाले 4 कंडीशन आएंगे. इतना करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज अ हेडर फाइल कॉल्ड एज ctype.h. so let me take you to a header file called as ctype.h. ctype.h. This header file called as ctype.h this header file called as ctype.h. Let's not look at C++, let's look at C header file. Let's not take this, let's go back to C. ये C++ का पेज ओपन हो रहा है. headers are there. In headers we have ctype.h. कहीं दिखाई दे रहा है ctype? Okay. Functions to determine type contained in the character data. तो character data का जो type है, इसके लिए हमारे पास है एक function called as, here I have something called as to lower and to upper. Converts the character to its uppercase and converts the character to its lowercase. अरे अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो जो भी कैरेक्टर दोगे आप उसको कन्वर्ट करेगा टू अपर केस एंड टू लोअर केस. तो जो भी डिपार्टमेंट कोड दोगे आप उसे वो कन्वर्ट करेगा टू लोअर केस अपर केस. तो अगर आपने लोअर केस दे दिया, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें हो जाएगा कन्वर्ट? एरर देगा. क्या कहा है? कन्वर्ट द कैरेक्टर टू लोअर केस एंड कन्वर्ट द कैरेक्टर टू अपर केस. ऐसे दो फंक्शंस है हमारे पास. तो अगर मैंने यहाँ डिपार्टमेंट कोड डीपीटी कोड ये लिखा, तो वो अपर केस, अगर मैंने स्मॉल केस बी दिया था तो स्मॉल केस विल नाउ बिकम अपर केस. कैपिटल बी. अपर केस. तो इन दिस केस दिस कंडीशन विल ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ट्रू रहेगा. बी एंटर किया तो
also. b not equal to a and b not equal to b, b not equal to b ट्रू है क्या? नहीं सर, फॉल्स है। फॉल्स False. है। फॉल्स है तो आप आगे जा सकते हैं बेसिक सैलरी एक्सेप्ट करने के लिए। Yes, sir. लेट्स सी डज इट वर्क। आपका डिपार्टमेंट कोड बी था तो मैंने स्मॉल केस भी दे दिया। कहता है डिपार्टमेंट कोड बी इज एंटर्ड इज इनवैलिड। अरे अभी अभी तो हमने पढ़ा ना, क्या कह रहा है, कन्वर्ट द कैरेक्टर टू Uppercase. अपर केस। तो मैंने यहाँ कन्वर्ट करने के लिए कहा था और आउटपुट में देख रहे हैं हम लोग ऐसा कुछ कन्वर्ट नहीं हुआ है। बी स्टिल Invalid का है. इनवैलिड नहीं। केस देखो इसका, स्मॉल केस Small दो case. केस ही है। हाँ. तो अंडरस्टैंड, ये कन्वर्ट तो जरूर करता है बट नॉट दैट वेरिएबल। यहाँ जो भी स्मॉल केस अल्फाबेट आप पास करोगे इट विल रिटर्न अपर केस इक्विवेलेंट। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मिसलीडिंग है। इट डज नॉट कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, इट टेक्स दिस स्मॉल केस अल्फाबेट एज अ आर्गुमेंट पैरामीटर एंड रिटर्न्स इट्स अपर केस इक्विवेलेंट। तो वो जो रिटर्न करेगा आंसर वो मुझे डिपार्टमेंट कोड में स्टोर करना चाहिए। अब ये कन्वर्जन हो जाएगा। तो टू अपर एक्चुअली डज नॉट कन्वर्ट, इट रिटर्न्स। लेट्स नॉट लुक एट द सिंटैक्स, दैट्स स्केरी, लेट्स नॉट। सो टू अपर में जो अपर केस कैरेक्टर और स्मॉल केस कैरेक्टर पास करोगे उसका वो अपर केस आपको दे देगा। तो लेट्स सी नाउ डज इट वर्क। और मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज भी कर देता हूँ। बोनस फॉर एम्प्लॉय, बोनस फॉर एम्प्लॉय फ्रॉम डिपार्टमेंट कोड सो एंड सो। हमने कहा बोनस फॉर एम्प्लॉय विद डिपार्टमेंट कोड सो एंड सो। थोड़ा सा स्टेटमेंट और मीनिंगफुल बनेगा। देखते हैं। इफ आई एंटर अपर केस ए, इफ आई एम रनिंग दिस कोड, इफ आई एंटर अपर केस ए, कहता है बेसिक सैलरी दे दो 30,000। हम क्या है, बोनस फॉर एम्प्लॉय विद डिपार्टमेंट कोड ए इज ₹0। ए से है इसलिए 00 है। सो दैट्स मच बेटर स्टेटमेंट दैट वी आर राइटिंग। सो लुक एट दैट, एक ही एग्जांपल और कितना इंप्रूव होते जा रहा है एग्जांपल। नेक्स्ट टाइम आई एंटर बी, बेसिक सैलरी समझो 50,000 है, तो ऐसे बोनस फॉर एम्प्लॉय विद डिपार्टमेंट कोड बी इज सो एंड सो। अरे व्हाट हैज इट डिस्प्लेड? ये तो हेक्स में डिस्प्ले हुआ। ओ यहाँ ए आ गया है इसलिए ए डिस्प्लेस द आउटपुट इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। अब मैं दोबारा ए लेता हूँ या सी लेता हूँ एंड आई एंटर बेसिक सैलरी एज 40,000। कहता है बोनस फॉर एम्प्लॉय विद डिपार्टमेंट कोड सी इज ₹20,000। परफेक्ट, इट इज नाउ वर्किंग, इट इज गिविंग यू द राइट आंसर। बट देन व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर, स्मॉल केस का क्या? दिस टाइम अराउंड आई डिसाइड टू एंटर स्मॉल केस कैरेक्टर। आई एंटर स्मॉल केस डी एंड बेसिक सैलरी इज 60,000। तो कहता है एम्प्लॉय विद डिपार्टमेंट कोड डी, अरे अपर केस डी, मैंने तो स्मॉल केस दिया था, इज ₹3,000। व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज दिस पर्टिकुलर फंक्शन has returned uppercase equivalent and that we are assigned to this variable। यानी डिपार्टमेंट कोड में जो पहला स्मॉल केस डी है उसका वो अपर केस इक्विवेलेंट आपको रिटर्न करेगा और रिटर्न वैल्यू आई स्टोर इन द सेम वेरिएबल। दैट मींस द स्मॉल केस डी हैज नाउ गॉट रिप्लेस्ड विद अपर केस कैरेक्टर। So we need to take a note on this to upper. Likewise, आपके पास to lower भी था. Okay, but here while you're displaying this character, make sure you escape it. Slash quotes so that department code सही से पता चलेगा यार ये department code है. Let's do it once again. This time round, I enter small case B and basic salary as 45,000 ₹1. कहता है bonus for employee with department B is ₹20,000, 2,25,000.50. That's the bonus that we are supposed to pay that particular employee. So it has correctly gone ahead displaying the result. और small case B आपने enter किया था, but that has now got converted to upper case. How does it happen? Because of this function called as toUpper. So take a note on toUpper. So write down toUpper. उसका syntax क्या है? So if you look at the syntax, it says toUpper, int toUpper.
या इसका सिंटैक्स है int to upper int ch. टेक दिस int to upper int ch. int to upper int ch. Okay. Right. Define in header file. Define in header file c type.h. कहाँ डिफाइंड है? c type.h. Define in header file c type.h. वो कन्वर्ट वर्ड है ना वहाँ, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे. Define header file c type.h. Push up. It takes a single integer. It takes a single integer, which is ASCII value of a character, which is ASCII value, which is the ASCII value of a character. यानी आपको उसमें इनपुट क्या देना है, पैरामीटर में क्या पास करना है, जैसे हमने डिपार्टमेंट कोड पास किया था, टू अपर डिपार्टमेंट कोड. इट टेक्स अ सिंगल इंटीजर व्हिच इज ASCII वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर. आपको मैं कहाँ ASCII वैल्यू पास कर रहा है? जब आप डिपार्टमेंट कोड एक्सेप्ट करे, जब आपने सी एक्सेप्ट किया था तो उसमें वैल्यू 67, 68, 65, 67, 67 ही था, तो आपने ASCII वैल्यू पास किया था. It takes a single integer which is ASCII value of a character as its argument or as its parameter. Done? Yes, sir. or no? Okay. If the argument passed, if the argument passed, ये जो पास कर रही है argument है, if the argument passed to this function is lowercase alphabet, is lowercase alphabet, the argument passed to this particular function is a lowercase alphabet, then it returns uppercase equivalent of the argument passed. देखिए आपका डी का डिपार्टमेंट कोड जो पास किया उसका वैल्यू क्या है, देखो क्या दिखाई दे रहा है, 100. 100. That's small case d. So when I'm saying department code 100, that 2 upper 100, 100 is the ASCII value of small case d. ये अभी तो डिपार्टमेंट कोड में यहाँ 100 ही है, पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जरा देखो डिपार्टमेंट कोड में क्या आ गया, सॉरी डिपार्टमेंट कोड में क्या आ गया, अभी तक है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हो जाने दो, अगली लाइन पे आ गए, डिपार्टमेंट कोड में क्या आ गया, देखो क्या आ चुका है, 68. 68, and that's uppercase D. So it takes a single character as its argument, okay, and if the argument passed is a small case alphabet, it returns its uppercase equivalent. It returns its uppercase equivalent. Okay, हमने पास किया था small case D, अब आ गया यहाँ आपका uppercase D, so it returns uppercase equivalent. Otherwise, it returns the character as it is. इसका मतलब क्या है? Otherwise, it returns the character as it is. यानी अगर मैंने पहली अपर केस को पास किया तो अपर केस का क्या कुछ और अपर केस होता है क्या? As it is पास होगा. यस, देखो अगर मैंने कैपिटल जी एंटर किया तो हमने एंटर किया कैपिटल जी जिसका वैल्यू 67 है, 71 है, तो 2 अपर 71, अरे वो तो ऑलरेडी अपर केस है, उसका क्या और अपर केस करोगे, ये देखो अभी भी वैसे की वैसे ही है 71. तो इफ आई पास एनी कैरेक्टर अदर देन स्मॉल केस अल्फाबेट, इट रिटर्न द आर्गुमेंट एज इट इज. इसका मतलब क्या है, और एक सिनेरियो देखो, if I enter next time another character which is not even an alphabet, जैसे मैंने एंटर किया हैश, अब अपर केस हैश होता है क्या, there is there anything as upper case hash?
So if the argument passed is not a small case alphabet, it will return the argument as it is. तो डिपार्टमेंट कोड में क्या है 35 is ASCII value of hash. तो आपने उसे टू अपर भी कहा तो you still get hash, nothing other than that. वो वैसे के वैसे रहेगा. So this to upper function returns you uppercase equivalent if the argument passed is small case alphabet, otherwise returns the argument as it is. जो पास किया वही रिटर्न करेगा. You pass $, you pass plus, minus, it will return as it is. If the argument passed is lowercase alphabet, that means between 97 to 122. Small case alphabet between 97 to 122. अगर 122 या 121 चेक करो Z का क्या है, उस रेंज में अगर कैरेक्टर आपने दे दिए तो ही उसका अपर केस इक्विवेलेंट दे देगा, अदरवाइज विल रिटर्न द आर्गुमेंट एज इट इज. जो पास किया वही आपको रिटर्न कर देगा. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? टू अपर टू लोअर. क्विक फीडबैक, समझ में आया नहीं आया? हाँ ना, जल्दी बोलो. स्वप्निल, रोहन, so you can pass anything to it. You can pass plus. I don't recollect what's the ASCII value for plus. You can pass $, you can pass alpha, beta, theta. तो अल्फा का वैल्यू कुछ तो 225 है, वो वैसे के वैसे रिटर्न करके देगा आपको. It will not change it. Unless you do not pass lowercase alphabet, this function will be of no use. This function will accept a lowercase alphabet as its parameter, return its uppercase equivalent. Convert विनोट कुछ नहीं करता है, returns its uppercase equivalent. और वो रिटर्न वैल्यू आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करनी होगी. हमने उसी वेरिएबल में स्टोर किया. So the lowercase is now replaced with uppercase, and then we proceeded with the program. So there are so many changes that we had to do. So code that appears correct. So ये जो अपने दोस्त ने कोड लिखा था ये भी सही था. Rather, last time we had stopped by saying, oh, we have now written a correct code. This was a 17 lines code, and now we have ended up. अगर 15 से भी काउंट करना शुरू कर लेते हैं हम लोग, 15 से लेके 52 तक, तो 17 line code has almost doubled to 35 lines. But now it's a much better code that we have written. We have ensured, we have used name constants, we have used meaningful names. Now याद करो, जब हम लोग clean code concept की बात करते हैं, then there are some parameters on which the quality of the code will be judged. So we are now looking at those parameters. हमने meaningful variable name दिया है क्या? Yes. Have we given a name constant? There are no magical numbers in the program. Yes. We have done validation. Yes. Input validation हमने यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है. Okay. We have avoided unnecessary condition check, small case के, by using this to upper. Okay. And that's how we have ended up writing a much safer and a clean code is what we have written. और error message आ रहा है, we are sending it to error stream, stderr. और हमने इसका impact देखा, error stream में आने पर it was displaying the error message in red color and so on. Normal messages are displayed in regular color. That was just the prompt. That will not happen on the command prompt. But IDs तो कम से कम आपको help करेंगे. यानी ये अलग है, ये error message है. If the input is wrong, I terminate the program by calling exit. Basic salary पूछा, user ने गलत basic salary देता है, तो I terminate. So no point in doing this processing if the input is wrong. Either the basic salary is wrong or the department code is wrong. ये हम लोग unnecessary अपना time waste नहीं करेंगे if the input is invalid. So we need to always do validation when you solve the assignments. Okay, यार assignment ही छोड़ो, जब भी जिंदगी में program लिखोगे, think about all possible cases. Today you as a developer have to write a code. That code should pass through all the tests. When I say through all the tests means what? Whatever code we supply, not necessarily whatever code we have supplied is going to be accepted as it is. कोई अपना code ऐसे as it is accept नहीं करेगा. There will be testers. The testers will be checking for the correctness of your code. And अगर आपका code सही है, then only the code will be accepted. Otherwise, it is going to be rejected. So you as a programmer have to ensure that you have thought about all possible cases where the program can fail and have handled those cases as well in the program. So write clean code. Okay. So what have we done? We have accepted the department code. We converted that particular department code to its uppercase equivalent. Then we did the input validation for the code. Then we asked user to enter the basic salary का validation कर लिया. Then we check अगर सब सारे input सही है, then we check क्या department code A नहीं है. If it is not A, I'll give this as a bonus 50%.
अगर ए है तो डायरेक्टली आ जाके बोनस प्रिंट करेंगे और बोनस का वैल्यू वी हैड करेक्टली इनिशियलाइज्ड वैल्यू है 0.0. Although unfortunately last time even if you did not initialize you got value as 0, but कुछ तो मुझे पर भरोसा रखो, 0 से initialize करना जरूरी है, because one fine day you will have surprise. If I do not initialize a variable, nobody in the world can predict what value it is holding, because when you define a variable, the variable is allocated some space in the memory. Now where in the memory will it be allocated space, you don't know. और उस memory पे अगर कोई already data है, so that becomes a garbage for your program. So to be on the safer side, we should always have known value into the variable. और एक rule कहा था मैंने, if the first statement perform the variable in the program is that of assignment. यहाँ जैसे डिपार्टमेंट कोड को आप पहली बार यूज करें, वहां असाइन करे वैल्यू उसमें स्टोर कर रहे हो, देन दोस वेरिएबल्स नीड नॉट बी इनिशियलाइज्ड. बट बोनस का ऐसा नहीं है. बोनस अगर कंडीशन ट्रू आता है तो अगर ये कंडीशन ट्रू आता है तो इन दैट केस यहाँ असाइनमेंट कर रहे हैं, बट अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो पहली बार बोनस यहाँ रीयूज किया जाएगा, वहां रीड कर रहे हैं. तो द फर्स्ट स्टेटमेंट परफॉर्म ऑन द वेरिएबल इज दैट ऑफ असाइनमेंट, दैट वेरिएबल नीड नॉट बी इनिशियलाइज्ड, अदरवाइज द वेरिएबल हैज टू बी इनिशियलाइज्ड. तो यहाँ हमारे केस में ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो बोनस का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग रीड करने वाले हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे होल्ड अ गार्बेज वैल्यू. अवॉइड दैट. Initialize such variables. So all those variables which are being used in the program, if they are not assigned value in the first case जहां उनको यूज किया जा रहा है, all such variables have to be initialized. Have you understood these guidelines? And these are true for all programming languages. The best thing about C is you learn some basic concepts, and then that helps you. You don't have to revisit them when you move on to some other languages. They hold true for all the languages. स्वप्निल, क्या डाउट है? क्वेश्चन पूछो राजा. स्वप्निल, हाँ कुछ नहीं सर, डाउट. कुछ नहीं, फीडबैक दिया करो. सर एक मिनट, जो लोअर केस टू अपर केस के लिए हमने गूगल किया उसका एक बार दिखाई ना, कौन से साइट पे? लोअर केस अल्फाबेट को अपर केस के लिए जो आपने गूगल किया ना, वो एक मिनट दिखाओ. देखा? ओके सर, थैंक यू. अरे बट ये मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है ना, आपने लिया नहीं क्या डॉक्यूमेंटेशन? आई सप्लाइड दिस डॉक्यूमेंटेशन एवरीबॉडी. अनजिप करके रखो, इंटरनेट होने की जरूरत नहीं. मेरे पास इंटरनेट ना हो तो भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ. ये कोई जरूरी नहीं मुझे इंटरनेट चाहिए. आई विल मिनिमाइज दिस. लुक एट दिस. ऑलवेज हैव द डॉक्यूमेंटेशन. मेरे पास जावा 8 का डॉक है, जावा 17 का डॉक है, वैसे पाइथन का डॉक है, वैसे C++ का भी डॉक रहेगा. आ गया सी डॉक. ओके, कहाँ गया डॉक? 17 डॉक. उसको एक्सट्रैक्ट करके रखना है आपको स्क्रीन पे. ये तो खाली CPP रेफरेंस. ये नेट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग हेडर पे जाएंगे और ये सारे फंक्शन सी टाइप फंक्शन टू डिटरमाइन सो एंड सो, और उसमें से अपने फंक्शन जो थे टू अपर टू लोअर जो भी था वो यहाँ से ही डिस्कस करना है. देखना व्हाट एवर द फंक्शंस, ये टू लोअर टू अपर ये मेरे मशीन से इंटरनेट पे नहीं होगा. हैव आई शेयर्ड दैट डॉक्यूमेंटेशन विद यू, यस और नो? जिप फाइल में डॉक्यूमेंटेशन है क्या नहीं है? सर मेरे पास नहीं है. मेरे पास नहीं. आपने वो जिप फाइल डाउनलोड किया है क्या पहले? पोर्टल पे है. लिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ना, सी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, यस और नो एवरीबॉडी? एक्चुअली मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना था तो सो मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया. स्वप्निल, हैव यू चेक उसमें है क्या डॉक? किसमें? जो जिप फाइल आपने डाउनलोड की है क्या? एग्जिट फाइल. मैंने जो सॉफ्टवेयर का कलेक्शन दिया है, आप में से किसी ने डाउनलोड किया है या नहीं किया है सी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर? सर नहीं किया. सर मैंने नहीं किया सर. और बॉक्स पे किया. सर मैंने किया है. आपने किया. उसमें है क्या नहीं है वो डॉक? एग्जांपल डॉक. नहीं सर, उसमें सिर्फ एप्लीकेशन. लेट चेक.
यही था क्या वो सारे? यही थे क्या? Yes, sir. Looks like there is no doc. So let me just add that doc and share with you once again. इसमें ऐड करता हूँ, साइट पे भी अपलोड कर देता हूँ और यहाँ भी आपके साथ इमीडिएटली शेयर कर रहा हूँ. तो those who want can just take it immediately, or you can when you download the bundle उसमें से आ ही जाएगा. मैं यहाँ भी आप लोगों के साथ शेयर करो, अनजिप करो, उसमें इंडेक्स की फाइल रहेगी, उसे यूज करो. Here I have sent across एक zip फाइल मैंने भेजी आपको, 40 MB की फाइल है. You will soon receive in your chat box, and I am uploading the same. Have you got everybody? Yes, sir. अनजिप करना, sir. उसमें इंडेक्स फाइल रहेगी, उसका शॉर्टकट बनाओ, डेस्कटॉप पे रखो, एंड यू विल हैव इट फॉर इमीडिएट रेफरेंस विद योर इमीडिएट रेफरेंस. Just give me a second. Now let's see something. ये इसे भी मैं अपलोड कर देता हूँ. तो जो इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे थे, you will also have one more link from where you can actually take that particular software. यहाँ मैंने जीसीसी भी दिया है आपको, सब कुछ आ जाएगा. विंडोज में लिनक्स चाहिए तो दैट इज आल्सो बीइंग एडेड ओवर हियर. एवरीथिंग इज देयर. So as and when it adds, I'll upload that also to the
और उसका लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर भी दिया है, बट जिन्होंने मोबाइल फोन पे है, जो सॉफ्टवेयर अभी एक्सेस नहीं कर पा रहे, just take that link and run that particular code, download that code later. But then look at the kind of efforts that we have to put in. The question was very simple and straightforward, but then when we decided to write a safe code, that really has taken has required for us to be putting a lot of efforts to get that particular work done. But then that's the difference between a code and a good quality code. You as my student, I want you to write a good quality code. So that was first assignment. What are the other question that was given? और कौन सा क्वेश्चन था? एक और कंडीशन देती सर। नहीं, कोई सर और पूरा question रीड दो। करो क्या? नहीं, सिर्फ हिंट दो ना, क्या था मुझे बता। सर हिंट था कि क्वांटिटी डिस्काउंट था उसमें और कैश ओके डिस्काउंट ओके था। ओके, लेट्स कम टू इट। ये आपका सॉल्यूशन मिल गया मुझे। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन। कोड रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, भले ये सही है, बाद में वो बात क्या है, आई विल नॉट इवन रीड दिस कोड बिकॉज यू हैव नॉट इवन इंडेंटेड फंक्शन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। यू हैव रिटन एवरीथिंग एट लेवल नंबर 0. All the statements that belong to the function should be indented from the margin. And ये आपके डिलिमिटर्स है, फंक्शन कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, ऐसा चाहिए था। तो ये इंडेंटेशन कर लेना पहला वाला। Then you define gross bill, net bill, total discount, quantity, product rate, quantity discount. Product का rate you have taken of type integer, not a very good idea. A product का quantity integer is acceptable to some line, but rate as a whole number is not a very good idea. So this should have been of type float. Quantity discount, I can give quantity discount which is 2.5%, 3.5%. I could give any discount. So it could be 350 rupees 0.5 paise. Then int is not allowed. Then you're saying cash discount, that's float, that's correct. Float, less gross bill. Nah, why do you need less gross bill? Then you're saying type of payment is 6, okay, and less gross bill 1. अरे ये क्या पता चलेगा, gross bill and less gross bill 1. अरे एक gross bill amount है, net bill amount है, उतना काफी है। ये क्या है less gross bill and less gross bill 1? Just meaningless kind of names which are there. You're asking the user to enter the quantity purchased. You're asking the user to enter the product rate, but since you have taken float, you should have made it F. Enter the mode of payment. अब यूजर को क्या सपने में आया है, क्या एक्सपेक्ट करना है यहाँ? आप बताइए, मैं यहाँ एंटर क्या करूँ मोड ऑफ पेमेंट? आशीष बताइए। सर कैश या कार्ड है। तो कैश या कार्ड मुझे कैसे पता चलेगा मैं यहाँ एंटर क्या करना है? हिंट तो दो। अगर कैश या कार्ड है तो बोलो ना यहाँ कैश या कार्ड, जो भी बोलो कहो ना, यहाँ कैसे पता चलेगा मोड ऑफ पेमेंट? यूजर एक्सेस मोड ऑफ पेमेंट, आपने प्रोडक्ट बिल क्वांटिटी ग्रॉस बिल अमाउंट कैलकुलेट किया, उसे प्रिंट किया, क्वांटिटी ग्रेटर देन 100, 100 क्या है? ओके, वो जाना जरूरी था। तो आपने ग्रॉस बिल अमाउंट दिया, क्या डिस्काउंट दिया है, बट 0.05 क्या है? ओके, देयर अगेन द चेंजेस हैज टू बी डन। तो जो भी आपने क्वांटिटी डिस्काउंट कैलकुलेट किया है, ग्रॉस बिल में से क्वांटिटी डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करने पर आपको एक आ गया लेस ग्रॉस बिल, तो लेस ग्रॉस बिल प्रिंट कर रहे, मांगा ही नहीं था आपको, तो नेट बिल अमाउंट पूछा था, तो लेस ग्रॉस बिल क्यों ले रहे? यू शुड हैव सेड नेट बिल अमाउंट। ओके, बट देन क्वांटिटी डिस्काउंट से जो ग्रॉस बिल में से क्वांटिटी डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करोगे, वो जो अमाउंट आएगा, ओके, उस पे आपको कैश डिस्काउंट देना है। ये क्यों कमेंट आउट किया आपने आशीष? सर बाय मिस्टेक हो गया वो। अच्छा, चाहिए ये रखना है या नहीं रखना है? हाँ हाँ रखना है सर। रखना है, तो ये अनकमेंट कर लेते हैं हम लोग, और अनकमेंट करने पे भी टोटली गलत है। आपने कहा पेमेंट टाइप इक्वल टू कैश, कैश आपने सिंगल कोट्स में डाला है। इन सी सिंगल कोट्स में सिंगल कैरेक्टर, क्या यहाँ सिंगल कोट्स एक कैरेक्टर है क्या? नहीं सर। मल्टीपल कैरेक्टर्स है, तो सिंगल कोट्स आर नॉट अलाउड। स्ट्रिंग अगर आपके पास है तो आपको डबल कोट्स देना जरूरी है। सिंगल कोट्स में सिंगल कैरेक्टर, मल्टीपल कोट्स में स्ट्रिंग। और आप यहाँ कह रहे पेमेंट का टाइप इक्वल टू कैश। अब यहाँ कितनी बड़ी गलती है, एक two strings cannot be compared in C language. I cannot compare strings because when you compare strings, अगर आपने कैश करके एंटर भी किया होगा ना, तो भी ये काम नहीं करने वाला है। Let's check it out. ये हमेशा फॉल्स देगा आंसर। ये अपना वर्किंग में चलते दोबारा और देख लेते हैं आशीष का कोड क्यों हमेशा फेल होने वाला है, हमेशा फेल होने वाला है। तो हम यहाँ आके चेक करते कंडीशन, एंड मैं कैश ही एंटर करता हूँ, फिर भी देखते हैं आशीष का कंडीशन कैसे फेल हो रहा है।
पर आशीष तो गुड, लॉजिकली आपने सही किया है, सिंटैक्टिकली गलत है। बिकॉज हर एक लैंग्वेज के अपने रूल है। क्वांटिटी परचेस मैंने कहा 10 आइटम्स परचेस किए, प्रोडक्ट का रेट क्या है, मैंने कहा 12, चलो आपने इंटीजर लिया इसलिए 12 रखता हूँ। मोड ऑफ पेमेंट क्या है, आपने कहा CASH कैश, तो कहता है बिल अमाउंट, ग्रॉस बिल अमाउंट इतना है, ठीक है 1200 रुपए, 120 रुपए, एंड देन वी हैव रीच दिस स्टेटमेंट। कहाँ गए यहाँ पेमेंट टाइप आपने क्या एंटर किया है, पेमेंट टाइप CASH सही एंटर किया है। इक्वल कैश है क्या, एक मिनट विल स्टॉप, वी आर हियर, हम लोग यहाँ से ट्रेस करते थे, यहाँ से दोबारा, ताकि एक लाइन आपको चेक करने की मौका मिले। क्वांटिटी परचेस 10, रेट 12, CASH। अभी यहाँ आ गए, ये ग्रॉस लेस बिल अमाउंट आपने ये प्रिंट कर लिया, जो मांगा ही नहीं था, ये प्रिंट हो गया। अरे ये कंडीशन चेक ही नहीं कर रहा है, ये डायरेक्टली यहाँ जा रहा है, इट्स डायरेक्टली जंपिंग, इट्स नॉट चेकिंग फॉर दिस कंडीशन। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू कंपेयर वन स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग्स, इफ यू कंपेयर इट डजंट कंपेयर द स्ट्रिंग। एक मुझे जरा बताइए आप, ने यहाँ एक्सेप्ट करते समय एड्रेस क्यों नहीं लिखाया, एम्परसेंड क्यों डाला, यहाँ एम्परसेंड डाला है, यहाँ एम्परसेंड डाला है, यहाँ क्यों नहीं एम्परसेंड क्योंकि डाला? वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग है तो क्या होता है, स्ट्रिंग का नाम ही उसका एड्रेस होता है। तो स्ट्रिंग का नाम अगर एड्रेस है, तो स्ट्रिंग का नाम अगर यहाँ एड्रेस है, तो स्ट्रिंग का नाम यहाँ भी तो एड्रेस ही है गुरु। तो here address is compared to another address. In C language, wherever you use string name, array name, string name, array name, वो array था, array के अंदर string store था। The name of an array in C represents address. तो आपने scanf में उसे इग्नोर कर लिया, एम्परसेंड नहीं डाला, पर जब आप कंपेयर करने जाएंगे वहां भी तो एड्रेस ही रिप्रेजेंट करेगा। So throughout the program, wherever you use array name, it will always represents address. तो आप क्या करें मालूम है, यहाँ एड्रेस कंपेयर कर रहे हैं, this address is compared to this address, and two addresses are never going to be common. So here what you are comparing is addresses. So rule is in C you cannot compare addresses, or rather you can, array name when you compare with the string constant, cache constant था, वो address को compare कर रहा है, और addresses will not be same, two things will not be at the same address. So वो comparison किया ही नहीं, आपका cash discount था या नहीं था वो चेक ही नहीं कर रहा है, किसी को cash discount नहीं देगा, 1 लाख का भी आइटम खरीदे तो भी cash discount नहीं देगा, nowhere at all. So again you have to learn few more things to solve this particular example. Okay, अभी तक हम लोग छोटे से example भी अटके हुए हैं, but then it is important for you to understand how to write this code correctly. Because अगर ये ना समझे हम लोग concepts, okay, basic things, then you are under impressed, आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, wherein what you are doing may be totally wrong. So let's discuss this particular solution all over again. And see how this example could have been solved. कैसे सॉल्व करना चाहिए था जरा देखिएगा। So if I was asked to solve this particular example, how would I solve? देखो, I cannot teach you, but I can definitely give you a lot of demonstration from where you can learn. यानी मेरी कोशिश है कि आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिखाते रहूं, और आपका काम क्या बनता है, हर एक एग्जाम्पल को देखना है, और यहाँ ऐसे क्यों किया, या तो आपको सोचना है या मुझे पूछना है अगर नहीं समझ में आता है तो. And as you learn, understand why I write the code in that fashion, you will then realize when to use what. Okay, so observation is one of the most important what do you say, quality that you have to be a good programmer. Observation, very very keen observation. Okay, so let's have a look at the solution. मैंने वेरिएबल डिफाइन किया प्रोडक्ट रेट, फ्लोट डिफाइन किया है, फिर ग्रॉस बिल, यहाँ भी कहा है ग्रॉस बिल, तो ये ग्रॉस बिल अमाउंट है एक्चुअली, ये ग्रॉस बिल अमाउंट है, नेट बिल, ये नेट बिल अमाउंट है, मैंने वेरिएबल का नाम भले नेट बिल दिया है बट इट वाज नेट बिल अमाउंट, फिर मैंने डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट 0.0f, तो इनिशियलाइज भी किया मैंने इसे 0.0f, बिकॉज फिर क्वांटिटी डिस्काउंट इज अनदर वेरिएबल दैट, यस करिश्मा क्या डाउट है?
सर मैंने 30 to 35% सॉल्व किया है, शेयर कर सकती हूँ। करो ग्रॉस अमाउंट तक किया है। करो। सर नोटपैड पे है। She says purchase quantity, product rate, quantity cash discount, product discount. ये डिस्काउंट नहीं था, ये डिस्काउंट का रेट था। क्या 0.05 प्रोडक्ट डिस्काउंट था या डिस्काउंट का रेट था? करिश्मा क्या था? एक मिनट सर। 0.05 रेट ऑफ डिस्काउंट था या डिस्काउंट था? रेट है रेट ऑफ और वो प्रोडक्ट डिस्काउंट था ही नहीं। दूसरा कैश डिस्काउंट सही है। क्वांटिटी परचेस 100 ये गलत है। ये कैसा क्वांटिटी परचेस 100? अरे ये मिनिमम क्वांटिटी परचेस फॉर गेटिंग डिस्काउंट वाज 100। डिस्काउंट पेड ओनली इफ द क्वांटिटी परचेस एक्सीड 100 यूनिट्स। तो ये क्वांटिटी परचेस 100 नहीं है, परचेस क्वांटिटी 100। तो ये पढ़ने पर किसी मिनिमम लगेगा 100 क्वांटिटी परचेस, ये परचेस क्वांटिटी 100 होता है क्या? ना। ग्रॉस बिल वेरिएबल नेम शुड नेवर स्टार्ट विद अपर केस लेटर। आपने यहाँ वेरिएबल नेम अपर केस से स्टार्ट किया, ये भी अपर केस से स्टार्ट किया है। नॉट अ वेरी गुड आइडिया, नॉट एक्सेप्टेबल। Then you ask user to purchase quantity units, okay? You ask user to enter product rate, accepted. You calculate the gross bill amount, and then you have printed the gross bill amount, okay? But then यहाँ भी changes थे. Variable name should be meaningful. Second, variable name will not start with uppercase letter. Okay, these are some changes that you also have to make in this particular code. Let's come back over here. So we have initialized, defined few variables. Cash discount मुझे calculate करना था और quantity discount भी calculate करना था. तो कैश डिस्काउंट के लिए मैंने 0.0 से इनिशियलाइज किया, क्वांटिटी डिस्काउंट को भी 0.0 से इनिशियलाइज किया, एंड देन आई हैव द क्वांटिटी परचेस्ड एंड पेमेंट मोड। मैं मोड ऑफ पेमेंट लिख रहा हूँ। आकाश ने पूछा था कैश एंड अदर थिंग्स, आई एम आस्किंग पेमेंट मोड। और देखो मैंने इंटीजर वैल्यू लिया है आकाश, तो स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो इंटीजर पेमेंट मोड ये कैसे चलेगा? हैव अ लुक एट इट। मैंने कहा कांस्टेंट इन कैश इज इक्वल टू 1, यानी कैश को मैं इंटीजर 1 से रिप्रेजेंट करूंगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ 1 रिप्रेजेंट्स कैश। मैंने कहा क्वांटिटी डिस्काउंट रेट, क्वांटिटी डिस्काउंट रेट इज 0.05। मैंने कहा कैश डिस्काउंट रेट इज 0.02। ये दो मेरे कांस्टेंट वेरिएबल्स है और दोनों फ्लोट टाइप के कांस्टेंट्स हैं, सो ऑन। देन आई कम हियर कांस्टेंट इंटीजर मिनिमम परचेज क्वांटिटी 100 है, यानी 100 आपको मिनिमम परचेज क्वांटिटी है फॉर व्हाट? फॉर डिस्काउंट, ओके। तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मिनिमम परचेज क्वांटिटी कितना चाहिए? 100। तो 100 क्या है? मिनिमम परचेज क्वांटिटी। मिनिमम परचेज क्वांटिटी फॉर व्हाट? फॉर डिस्काउंट। मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू परचेज तो अवेल क्वांटिटी डिस्काउंट। अगर आपको क्वांटिटी डिस्काउंट चाहिए तो दिस इज द मिनिमम क्वांटिटी दैट यू हैव टू परचेज। देन आई आस्क यूजर प्लीज एंटर द क्वांटिटी परचेज्ड एंड we will do what she had done, how many units, okay. And I use %i, scan it, numeric value accept कर integer %i से ही कीजिएगा। कोई इनपुट इंटीजर में देगा, कोई इनपुट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में देगा, तो ऑलवेज एक्सेप्ट बाय यूजिंग %i। Then I ask user to enter rate of product, so I accept the rate of product rate, okay. Then I ask user a very simple question, yes please. सर क्वांटिटी कैसे बाकी फ्लोट वगैरह में देंगे? क्वांटिटी तो मतलब होल नंबर ही होगा ना? होल नंबर, इसलिए तो मैंने क्वांटिटी के लिए कहा गया क्वांटिटी 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 लिखा। सर तो फिर परसेंट आए परसेंट वो आई थोड़ी किसके लिए दूसरे था? नंबर सिस्टम में देने वाला है सर। अरे परसेंट आई किस बात के लिए था, भूल गए क्या? सर दूसरे नंबर सिस्टम्स के भी वो एक्सेप्ट करता है इसलिए, लाइक हेक्साडेसिमल, ऑक्टल उसी लिए तो कर रहे थे। तो डाउट का है? ओके सर, पर कोई सर दूसरे नंबर सिस्टम में क्वांटिटी क्यों कौन देगा? सा और नंबर सिस्टम बताओ? सर हेक्साडेसिमल, एक्सेप्ट ऑक्टल ये करेगा ना सब। परसेंट आई पे। हाँ तो सर वो कौन देगा? वो वैसे थोड़ी कोई देता है सर, सब अरे आप नहीं डेसिमल। देते तो इसके लिए क्या जरूरी है? कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, वो हमेशा दिन भर रात हेक्स में ही बातें करता है, वो हेक्स में भी दे सकता है। आपने बचपन से डेसिमल सिस्टम में काम कर रहे हो, इसका ये मतलब है दुनिया डेसिमल सिस्टम में काम करती है? नहीं सर। हाँ, तो व्हाई टेक दैट रिस्क जबकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू डू दैट। तो बाय सेइंग परसेंट आए, फिर यहाँ पर डेसिमल सिस्टम में दिया है तो कुछ गलत होने वाला है क्या? नहीं सर बिल्कुल नहीं।
तो ये सही काम करेगा. तो व्हाई नॉट राइट अ कोड व्हिच विल ऑलवेज वर्क राइट. डेसिमल में दिया तो भी सही काम करेगा, ऑक्टल में दिया तो भी सही काम करेगा, हेक्साडेसिमल में दिया तो भी सही काम करेगा. यूज %d व्हेन यू आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द डेटा ओनली इन डेसिमल सिस्टम. अगर आपको इनपुट सिर्फ डेसिमल सिस्टम में ही चाहिए, आपके सिर्फ डेसिमल सिस्टम ही चलता है, और अगर यूजर को फोर्स करना है टू एंटर द डेटा ओनली इन डेसिमल फॉर्मेट, देन ओनली यूज %d, अदरवाइज यूज %i. देन आई एक्सेप्ट द प्रोडक्ट रेट. बट इंपॉर्टेंट थिंग वाज, वो जो आपने कैश एक्सेप्ट किया था उसे मैं कैसे हैंडल कर रहा हूं. ऐसे व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट. एंटर 1 फॉर कैश एंड 2 फॉर अदर. यानी कैश के अलावा कुछ भी रहेगा तो आप यहाँ 2 एंटर कीजिएगा. तो मैंने कहा %d एम्परसेंड मोड ऑफ पेमेंट. यहाँ भी आप %i का इस्तेमाल कर सकते थे. 1 फॉर दिस एंड 2 फॉर अदर. तो जो भी यूजर एंटर करेगा 1 क्या या 2 क्या, यानी कैश है तो 1 एंड कैश के अलावा कुछ है तो 2. होता है ना वो IVR पे, enter 1 to speak in English, enter 2 for doing this. You don't say English, type English, फिर English का spelling आधे लोग गलत लिखे, उससे अच्छा है 1 2 and so on. तो I have used क्या कहेंगे, एक ऐसा एक नंबर लिया है which represents choice of the user. Now user enters payment mode. Then I calculate the gross bill amount, quantity purchased into product rate. That's the gross bill amount. Then you have to give quantity discount अगर आपका क्वांटिटी परचेज इज ग्रेटर देन मिनिमम परचेज क्वांटिटी. तो मैंने कहा क्या आपका क्वांटिटी परचेज ग्रेटर देन मिनिमम क्वांटिटी परचेज है क्या. बिकॉज यहाँ हमने कहा था क्वांटिटी डिस्काउंट इज पेड ओनली इफ द क्वांटिटी परचेज एक्सीड्स 100 यूनिट्स. यानी 100 यूनिट्स के आगे जाएगा तो ही देना है, 100 यूनिट्स भी नहीं चलेगा. तो आई सेड क्वांटिटी परचेज ग्रेटर देन 100 मिनिमम क्वांटिटी परचेज, मिनिमम परचेज क्वांटिटी अगर है तो हमने कैलकुलेट किया क्वांटिटी डिस्काउंट. अगर ये कंडीशन फॉल्स था तो क्वांटिटी डिस्काउंट का वैल्यू 0 ही रहेगा, ये वैल्यू 0 रहेगा. फिर आके चेक करते हैं क्या पेमेंट मोड इक्वल टू कैश है क्या. कैश, व्हाट इज कैश. तो यहाँ हमने डिफाइन किया था कैश इज 1. यानी अगर यूजर ने 1 एंटर किया है तो वो कैश है, और 2 एंटर किया है तो एनीथिंग अदर देन कैश. तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या पेमेंट मोड इक्वल टू कैश है क्या. इंटीजर्स कैन बी कंपेयर्ड. कंप्यूट द कैश डिस्काउंट इफ द मोड ऑफ पेमेंट इज कैश, एंड अगर मोड ऑफ पेमेंट कैश है तो ये कैलकुलेट करेंगे. तो मैं कहूँगा कैश डिस्काउंट कितना है. कैश डिस्काउंट रेट, व्हाट वाज द कैश डिस्काउंट रेट, वाज 0.02, 2% देना था. कैश डिस्काउंट रेट इनटू किस पे देना था कैश डिस्काउंट, ग्रॉस बिल अमाउंट लेस क्वांटिटी डिस्काउंट. ग्रॉस बिल अमाउंट में से क्वांटिटी डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू आएगा उस पे आपको कैश डिस्काउंट देना था. तो वी आर गोना गिव द कैश डिस्काउंट ऑन दैट, एंड देन आई एम सेइंग टोटल डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट प्लस क्वांटिटी डिस्काउंट. फिर ग्रॉस बिल अमाउंट में से टोटल डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आप ये आपका नेट बिल अमाउंट, फिर हमने नेट और ग्रॉस बिल अमाउंट डिस्प्ले कर लिया. That's how this example should have been solved. Let's trace this code once again from here. We have these variables. इनको initialize किया हमने. यहाँ पे we ask user to enter the quantity purchased. user कहा please enter quantity purchased. कितने हैं, उसने 200 आइटम्स परचेस किए. Then we ask user please enter the rate of the product. So we are accepting the rate of the product. This product costed us 14 rupees 75 paise each. Then we are asking what is the mode of payment. I said enter 1 for cash and 2 for others. So I'm saying what is the mode of payment, enter 1 for cash and 2 for other. We decide to give 1 cash है. तो now we calculate gross bill amount. अभी तक gross bill amount में कोई garbage value हो सकता था. अब हम कह रहे हैं क्वांटिटी परचेज विच इज 200 इनटू प्रोडक्ट रेट दैट इज 14.75. ये कैलकुलेट करने पर ग्रॉस बिल अमाउंट में कोई तो अमाउंट आ गया 2950. फिर हम चेक करें क्या क्वांटिटी परचेज विच इज 200 ग्रेटर देन मिनिमम क्वांटिटी परचेज दैट इज 100. क्या 200 ग्रेटर देन 100 है क्या. यस. तो वी गो इनसाइड एंड वी कैलकुलेट क्वांटिटी डिस्काउंट. क्वांटिटी डिस्काउंट कितना है, ग्रॉस बिल अमाउंट इनटू क्वांटिटी डिस्काउंट रेट 0.05. तो वी कैलकुलेट द क्वांटिटी डिस्काउंट. We got the quantity discount that is 147.50 paise is the discount. फिर हम चेक करें क्या पेमेंट मोड इक्वल टू कैश है क्या. ये पेमेंट मोड 1 था, 1 इक्वल टू 1 है क्या. यस. अगर है हमने कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया. कितना है, कैश डिस्काउंट वाज पेड ऑन व्हाट, ग्रॉस बिल अमाउंट लेस क्वांटिटी डिस्काउंट. और वो आशीष ने लिया लेस वाला वेरिएबल. कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेट करो ना. ग्रॉस बिल अमाउंट में से क्वांटिटी डिस्काउंट जो सब्ट्रैक्ट करने पर जो अमाउंट आएगा उस पे आपको 2% देना है. एंड देन इसे जो टोटल डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट आया था 147 रुपीज और कैश डिस्काउंट था अराउंड 56 रुपीज. दोनों को ऐड करने पर आगे आपका डिस्काउंट अमाउंट
एंड ये डिस्काउंट अमाउंट अगर आपने ग्रॉस बिल अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, आगे आपका नेट बिल अमाउंट, एंड देन वी डिस्प्ले द ग्रॉस एंड द नेट बिल अमाउंट राउंडेड अप टू 2 digit precision. So while your gross bill amount is 2950, net bill amount that one is supposed to pay is 2746, यानी उसको कुछ बाकी का अमाउंट डिस्काउंट मिल चुका है. आजकल हम लोग जब परचेस करने जाते हैं ना, वो बताते हैं यू हैव सेव्ड सो मच रुपीस, करेक्ट, योर टोटल डिस्काउंट वाज सेव सो मच. ऐसा हम भी कर सकते थे. Just to make the customer happy कि मैंने कितना डिस्काउंट कर लिया. Okay, let's run the code once again. मैं डायरेक्टली रन करता हूँ. एंटर क्वांटिटी पर यूनिट परचेज, मैंने कहा 300 यूनिट्स परचेज किए. हर एक प्रोडक्ट का रेट क्या है? 12.5 है. तो कहता है मोड ऑफ पेमेंट क्या है? मैंने कहा कैश है. तो कहता है योर ग्रॉस बिल अमाउंट इज ₹3750. नेट बिल अमाउंट आपको पे करना है सिर्फ 3491 and you have earned a discount of 258 rupees, यानी 3750 के परचेस पे आपको 258 rupees का डिस्काउंट मिल चुका है. कस्टमर also feels happy. Okay, so that's how you could have solved this particular example. Many of your friends are so very prompt to leave the session right at 8:30, but not join the session at 8:30. God bless them. Okay, have you understood what we have seen right now? अभी यही सॉल्यूशन मैं दोबारा आपके साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ. या आपको दोबारा सॉल्व करना है. You have to solve it on your own. How many of you are confident that you can solve it on your own? Once again, raise your hand. सॉल्यूशन डिस्कस किया है, दिखाया भी है, डिस्कस भी किया है. अब तो सिर्फ कोशिश करनी है लिखने का, वही कोड दोबारा लिखने का. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर गोना सॉल्व इट? मे नॉट बी कॉन्फिडेंट बट सॉल्व करेंगे. राहुल, सुदर्शन एंड सुशांत क्यों नहीं सॉल्व करने वाले आप? Sir, I'm still covering the YouTube videos which you have sent, but from tomorrow I am on leave of 12 days, so I would be getting ample amount of time to prepare. So I think I would be writing the program shortly now. Okay, even then what I say is, अभी तो डिस्कस किया, whatever we have discussed, you have understood. Yes. So why not just make an attempt to write the same thing as it is? Yes, but the thing is, it is a long code. It's a long code, but logically it's very simple. You normally go on to purchase certain things, yes or no? Yes. So it is important. You may go wrong, doesn't really matter. But start writing the code. However poor it may be, वो काम ही ना करे, it may generate 100 errors. But somewhere you have to start writing the program. So let it generate errors. Let it not run. Worst case क्या होगा? It will not run. Run छोड़ो. It may not get compiled. Forget about running. It may not get compiled. That's the worst thing that can happen. Yes. Do it, please. लिखो, वो रन ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कंपाइल ना हो. आई अप्रिशिएट करिश्मा ने आधा कोड लिखा था, ठीक है ना यार, बट शी इज मेकिंग एन अटेम्प्ट. मे बी शी वाज नॉट स्मार्ट इनफ टू थिंक अबाउट आगे क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा था, बट शी हैज एटलीस्ट मेड एन अटेम्प्ट. दैट्स समथिंग व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट. ओके, एंड एज यू कीप राइटिंग द प्रोग्राम्स, आई टेल यू, you yourself will not realize when you have started solving some very complex problems. So एक ही चीज इंपॉर्टेंट है इस करियर, इस प्रोग्रामिंग में सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए, that we have to start writing programs, और कुछ नहीं. So Yes. once you start writing programs, everything falls in place, and you realize you are unnecessarily scared about things, and actually the things are very very simple. Yes. हॅलो सर, माझे पण ते 2-3 लेक्चर मिस झालते एक्झाम म्हणून. 4 लेक्चर झालते, कव्हर केल्यानंतर होईल. ठीक आहे ना, मी म्हणतो मिस झालेले कव्हर करा, पण त्या कव्हर करण्यासाठी आहे ते स्किप करू नका. चालू आहे ना, करा कम्प्लीट. प्रयत्न करा, लिहा कोड, छोटे मोठे कोड लिहा.
Look, the entire session we devoted only to 2 examples, and we have seen how we can move from a solution which appears to be right to a much more neat and clean solution. And just to tell you, what we have written now is also not even correct solution. यानी इसमें भी there is a lot of scope for improvement, but based on whatever concepts we have learned till now, based on that, it's a very good code that we are writing, way beyond what normally textbooks will put across. Textbooks writes the examples, kind of examples that are given in the textbook are, most of the textbooks are nonsense. They are just a very poorly designed code. Okay, and that code is going to fail. So right from day one, when we started writing the program, I could have kept this code size जो आशीष ने लिखा था 15 लाइन का कोड, उसमें भी हम लोग खुद को खुश कर सकते थे कि अरे छोटा सा कोड है, अरे वो छोटा सा कोड है मगर गलत है, उससे क्या फायदा है, बड़ा क्यों हुआ? We did some small things only, वैलिडेशन किया, बेसिक सैलरी का वैलिडेशन किया, डिपार्टमेंट कोड का वैलिडेशन किया. The code is not big actually. We are thinking about all possible scenarios where the things can go wrong and making provisions in the program for that code to always work correctly or identify if something goes wrong. So that's the habit, or that's the thought process that I want you to, or I'm trying to inculcate in you. So once you have that particular thought process, क्या रे नहीं कोड लिखते समय मुझे सारी छोटी-छोटी चीजों के बारे में सोचना है. As you learn programming techniques, if you had not thought about that thing, even if I teach you programming concepts, you will not apply them. Now that you know क्या करना है, कैसे सोचना है, किन चीजों का ख्याल रखना है, if you know that, so as I teach you the constructs, आज हमने मैं 2 फंक्शन दिखाए, 2 upper and 2 lower, उसका एक असाइनमेंट है वो आपको कंप्लीट करके आना है. You have to explore header file ctype.h, उतना ही असाइनमेंट है, बस एक्सप्लोर करना header file ctype.h. I'm introducing you to a new header file. जब भी मैं आपको कोई नया हेडर फाइल बताऊं, उसे आपको एक्सप्लोर करना है, बिकॉज दैट हेडर फाइल विल प्रोवाइड यू समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी यूजफुल. जस्ट चेक, डोंट इवन रीड द एंटायर थिंग, क्या क्या वो देता है, क्या क्या फंक्शन है, फंक्शन का पर्पस क्या है, वन लाइन में पढ़ो. डोंट इवन सी द एग्जांपल्स, जस्ट रीड what services, what functions do this particular header file provide. ctype.h. I'm uploading that entire zip file. तो मैंने आपको वैसे भी zip file शेयर किया है, और अपने WhatsApp ग्रुप पे I resend a new link to the C software collection, जिसमें वो डॉक्यूमेंटेशन भी है. डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा सॉफ्टवेयर्स एंड स्टार्ट यूजिंग देम, स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम्स. अगर इंस्टॉल नहीं करना है, ऑनलाइन कंपाइलर पे रन कीजिएगा, चल जाएगा. ब्राउजर में रन कीजिएगा, चल जाएगा. बट प्लीज स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम्स. हाउएवर राइट रॉन्ग कुछ भी हो, लिखना शुरू करो. एंड द अर्लियर यू डू, मोर कॉन्फिडेंट विल बी. आगे जाएंगे तो बैकलॉग बढ़ते जाएगा और फिर डर लगेगा प्रोग्रामिंग का, जिसका डर लगना ही नहीं चाहिए. Start writing programs. So I want all of you to solve that example and come prepared for the next class. We are again going to come back to the same example because both the examples that we have written are not perfect. There is still scope for improvement. So with that note, we'll stop here today. See you next time. Take care. Love you all. Bye bye. Solve कीजिएगा जरूर.